guys. So for the past few days, I've been receiving a lot of calls and emails where people are asking as to how to go about solving these online mocks and online CLAT paper now. Okay, so everything is online. So this happened way back in 2014-15 also when I was preparing for CLAT. Okay, there was same hue and cry about the new model, about the online test being conducted, because let's face it, most of us are not very comfortable facing an exam online on screen, because हमें 10th 12th तक यही सिखाया जाता है कि जितना कम स्क्रीन टाइम होगा उतना ही अच्छा रहेगा हमारी आंखों के लिए. Now this becomes problematic in an exam like CLAT this year, which is conducted online. So let me tell you the reality. Okay, for the past 3 months, and in fact more than that, we've been staying under lockdown. ठीक है, most of the study material and most of the mocks that we are attempting for past 3 and more than in fact 4 months सिर्फ वही है जो हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं. ओके, सो नो नीड टू cry about it, no need to feel bad about it, no need to feel bad about the situation you are in. ठीक है, everybody is in the same situation. पहली बात तो ये है. एंड सेकेंडली 4 महीने जब हमको हो गए हैं, हमें 2 महीने और है, सो 6 months आर मोर देन एनफ टू अंडरस्टैंड कि हम उसके कैसे डील करें. ओके, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं यहाँ वहां जो मैं अभी आपको बताऊंगा, और आप क्या एडवांटेजेस ले सकते हैं ऑनलाइन मॉक्स देने के जो कि ऑफलाइन मॉक्स के मुकाबले एक्चुअली बेटर है. हाउ इज इट? आई एम गोइंग टू टेल यू बिकॉज आई हैव दैट पर्सनल एक्सपीरियंस. आई हैव बीन देयर, डन दैट. ओके, so firstly let me tell you what is the change in strategy. Okay, so when I used to take mocks offline, मतलब मैं जब पेपर पे दिया करता था तो मैं करता था कि अपने सबसे इजी सेक्शन से स्टार्ट करता था जिसमें बहुत कंफर्टेबल था. However, when I shifted online, I realized कि मुझे स्क्रीन टाइम थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा बिकॉज मेरे को बहुत ज्यादा स्क्रीन पे स्ट्रेस हो रहा है आंखों में, which is problematic. So I went to my mentor and asked him कि sir, how do I deal with it because I'm not able to do it properly or this is very difficult for me and all of that. I asked all the questions that you guys might have right now. Okay, and he told me कि एक 20-10 रूल होता है और 20-20 रूल होता है. इस टाइप का कुछ रूल होता है जहां पे when you look on a particular screen for 20 minutes आपकी आंखों में से पानी आने लग जाता है. So do something 10 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए ऐसे कहीं और देखो. Now that is not practical for me. I'll tell you why. Because when I'm giving an exam जिसमें सिर्फ 2 ही घंटे का मुझे टाइम मिला है, I'm actually stressed about solving a lot of questions. मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं 20 मिनट के बाद में से 10 सेकंड इधर उधर देखने लग गया because that would distract me from the entire paper. Doesn't make sense, right? So what you guys have to do is you can try and experiment all of this in your mock test that you're going to give in next 1.5 month. I used to start with the weakest section. Okay, so for example नए पैटर्न में my weakest section would have been say English. ठीक है, English में there are say 5 or 6 passages and I don't like to read those long passages on screen. तो मैं क्या करता, I would have solved 3 passages at a time. Okay, मैं English से start करता, I would have solved 3 passages at a time. उसके बाद में उसको आधा छोड़ के I would have moved to a section which I'm more comfortable with. ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल से मोर कंफर्टेबल विद लीगल रीजनिंग, मोस्ट ऑफ अस आर, राइट? सो आई वुड हैव मूव टू लीगल रीजनिंग. मैं वो वाला सेक्शन ठीक से पूरा करता बिकॉज मैं उसमें ज्यादा कंफर्टेबल हूं, मेरे को वो आसानी से आता भी है. सो आई डू दैट सेक्शन एंड देन कम बैक टू इंग्लिश एंड कंप्लीट इट. इससे क्या होगा, एक तो मेरा दिमाग फ्रीज नहीं होगा स्क्रीन पे, क्योंकि मैं इतने लंबे लंबे 6 पैसेजेस एक साथ पढ़ूंगा तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए. ओके, सो सी दिस इज माय एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग. यू कैन ट्राई दिस इन योर मॉक्स. सो मॉक्स इसीलिए होते हैं कि आप जितना एक्सपेरिमेंट करना चाहो कर लो. ठीक है, उसके अलावा कुछ भी चेंज हुआ नहीं है. ओके, क्वेश्चंस वही आएंगे, उसी तरीके से पूछे जाएंगे, जो नया पैटर्न है वही रहेगा. नथिंग हैज चेंज्ड. ओके, सो लेट मी गिव यू सर्टेन टिप्स एज टू हाउ टू यूज ऑनलाइन मॉक्स टू योर एडवांटेज नाउ. ओके, सो ऑनलाइन मॉक्स गिव यू सर्टेन काइंड ऑफ ऑप्शंस व्हिच ऑफलाइन डजंट. ओके, ऑफलाइन में अगर आप एक बार आंसर ओएमआर शीट में मार्क कर दो, आपके पास दूसरा चांस नहीं होता उसको सही करने का. But online mocks give you that chance wherein you can erase your response and then you can write or basically mark it again. Okay, online mocks give you certain other options also. Okay, so for example there is an option called save and next. तो जब हम कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, उस क्वेश्चन की 3 ही पॉसिबिलिटीज है. या तो हमें आता है, या हमें नहीं आता है, या फिर हमें आइडिया है बट हम श्योर नहीं है. ठीक है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये थर्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं जहां पे हमें आइडिया तो है बट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट. So online mocks give you this option called mark for review, wherein you mark the answer. ठीक है, आप आंसर कर देते हो उसको but you're not sure about it, तो आप उसको mark for review कर देते हो. तो आप पूरा पेपर जब एक बार सॉल्व करके आ जाओगे तो you can look at it again ताकि उस पॉइंट पर आपका टाइम ना वेस्ट हो.
So that is an advantage of online mock or an online test over an offline test, right? तो मार्क को रिव्यू कर दोगे, सो एक येलो कलर की लाइट आती है जनरली, और बेसिकली तो एक यू गेट अ सेट, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 150 क्वेश्चंस, एक 150 क्वेश्चन का सेट साइड में आ रहा होगा. सो फॉर एग्जांपल से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमें आते हैं, सो फर्स्ट और सेकंड हम मार्क करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, तो उसमें ग्रीन कलर का मार्क आ जाएगा, ठीक है. अगर हम मार्क फॉर रिव्यू करेंगे मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन को, तो उसमें येलो कलर का आएगा, ताकि हमें पता चल जाएगा एंड में कि हमने कौन कौन से मार्क फॉर रिव्यू किए थे, सो दैट वी कैन गो बैक टू दोस क्वेश्चंस, read it again and understand कि हमारा आंसर सही है गलत है. Okay, so that is a real advantage of doing it online over offline. So online, I understand there are a lot of problems because what happened during our time was during exam. In fact, this happened with me. I'm not kidding. This happened with me while I was doing my questions. मेरा कंप्यूटर ही बंद हो गया था. Okay, the system stopped working. It started after 6 minutes. Okay, at that time in 120 minutes we used to have 200 questions. 6 मिनट लूज कर जाना, आई वॉज पैनिक्ड. बट द ओनली ऑप्शन यू हैव व्हाइल डूइंग एन ऑनलाइन टेस्ट और एनी टेस्ट फॉर दैट मैटर इज टू बी एज काम एज यू कैन. ठीक है, इट्स ओके, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, इट्स फाइन, इट्स ऑल राइट. ठीक है, मैंने पहले वीक सेक्शन करने को क्यों बोला है, क्योंकि पहले अगर आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है ना, सो यू आर साइकोलॉजिकली यू आर श्योर कि मेरे पास आगे भी 1 घंटे से ज्यादा है, 2 घंटे है मेरे पास, तो मेरे पास 1.5 घंटा बचेगा. बट अगर उसको लास्ट में करोगे और फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज हम फिर फटाफट करने की सोचते हैं, इसमें हम गलतियां कर देते हैं बहुत सारी. एक और चीज होती है कि अगर मान लो मैं पहले एक अपने वीक सेक्शन से स्टार्ट कर रहा हूं और मुझे उसमें थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं, तो हम थोड़ा साइकोलॉजिकली थोड़े नॉर्मल रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आगे हमारे कंफर्टेबल सेक्शंस आने वाले हैं. बट अगर मैं कंफर्टेबल सेक्शन से स्टार्ट करता हूँ और मुझे उसमें थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं, देन आई गेट पैनिक कि यार, कि तो मेरा कंफर्टेबल सेक्शन था, मुझे इसमें ही नहीं आया, तो मुझे हो सकता है कि जहां मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ वहां तो मुझे और भी नहीं आएगा. उससे हम पूरा पेपर ही ठीक नहीं कर पाते. ओके, सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि start with a section you're not very comfortable with, basically your weak section, do half of it, move to a section where you are more comfortable with, come back to it and complete it. इससे बहुत टाइम बचेगा. try it in your mocks, I bet बहुत टाइम बचेगा इससे. ठीक है, if there are any other doubts you guys have, always write in the comment box. You can always mail it to me on the ID mentioned in the description. I'll be more than happy to answer all the queries. All the best guys, no stress, just work hard. Thank you.